Hello everyone, my name is Rishabh Shukla and today's topic is Smith chart and its application. Okay, so foundation of Smith chart is based upon the reflection coefficient gamma. Okay, how we can derive the constant R circle and constant X circle which constitute the Smith chart. It can be derived on the basis of reflection coefficient. Okay, so all of you know the maximum possible magnitude of reflection coefficient is 1, or in short I can say the mod gamma is always less than or equal to 1. That is why the complete Smith chart is constructed inside a unity circle. Okay, it cannot constructed beyond the unity circle. Unity circle, I mean to say a circle with radius unity. Okay, so all of you know the reflection coefficient at the load end can be described by ZL minus Z0 upon ZL plus Z0, where ZL is your load impedance and Z0 is your characteristics impedance. So what I am assuming the reflection coefficient gamma as a complex quantity. Okay, so it can be represented by gamma r plus j gamma I, where gamma r is real part of reflection coefficient and gamma I is imaginary part of your reflection coefficient. So now I would like to find out gamma in terms of normalized load impedance. So first of all, see what is normalized load impedance. If you will divide the load impedance capital ZL by the characteristics impedance of your transmission line, so whatever value you will get, it is described as normalized load impedance small ZL. Let me repeat it. Whenever you will divide load impedance capital ZL by characteristics impedance of your transmission line, whatever result you will get, that is described as normalized load impedance small ZL. And still here I am assuming it is a complex quantity, so it can be represented by some real part R plus J times some imaginary part X. Okay, so now your job is to put the value. Okay, your job is to represent this gamma value in terms of normalized load impedance. So in order to represent in terms of normalized load impedance, what you need to do, you need to divide numerator as well as denominator by characteristics impedance Z0. So it will become gamma is equal to ZL upon Z0 minus 1 divided by ZL upon Z0 plus 1. And you know ZL upon Z0 is what? ZL upon Z0 is nothing but small ZL. Okay, so gamma will become small ZL minus 1 upon small ZL plus 1. So which is represented over here, gamma is equal to small ZL minus 1 upon small ZL plus 1. And gamma is what? Gamma is gamma R plus J gamma I. So just put over here. Next step, what is the next step? Next step to find out ZL. Okay, using this equation gamma R plus J gamma I is equal to ZL minus 1 upon ZL plus 1. Using this equation, just find out the value of ZL. Just find out the value of ZL in terms of gamma R and gamma I. It's a very easy step. So once you will simply rearrange the term, you will get this equation. ZL is equal to 1 plus gamma R plus J gamma I divided by 1 minus gamma R plus J gamma I. And what is the normalized load impedance? It is small r plus J small x. Okay, so if I would like to find out the value of R and value of X using this equation, what I need to do, I need to represent this term. Okay, this term in the term of real part plus some imaginary part. Okay, so I would like to represent this complete term as some real part plus some imaginary part. Okay, so once you will do this, you will see R is equal to, and compare both the side, you will get R is equal to 1 minus gamma R square minus gamma I square upon 1 minus gamma R whole square plus gamma I square. In the same way you will get the equation for X. Okay, what you need to do, you need to just simplify this term. Okay, this term, and try to represent this term as some real part as well as imaginary part. Okay, real part plus imaginary part. In terms of real and imaginary part, you have to separate out this term. Okay, and now compare real and imaginary part from LHS and RHS. You will get these two equations. Okay, now once you will get these two equations, okay, so try to rearrange this equation. R is equal to 1 minus gamma R square minus gamma I square upon 1 minus gamma R whole square plus gamma I square. Okay, try to rearrange this equation in terms of a circle. It is very simple. Try to rearrange this complete equation in order to constitute a circle of equation of the circle. So it will become gamma R minus small r upon 1 plus small r whole square plus gamma I square is equal to 1 upon 1 plus r whole square. So you can see
it is the equation of circle. Okay, if I will if I am assuming gamma r and gamma I as axis variable, so it will represent a equation of circle, okay, with center. Okay, if gamma r represents horizontal axis, gamma I represents vertical axis, so it is nothing but it is the equation of family of circle having center r upon 1 plus r comma 0 and radius 1 upon 1 plus r. Okay, fine. In the same way, rearrange this term and try to form a family equation of family of circle. So it will see gamma r minus 1 whole square plus gamma I minus 1 upon x whole square is equal to 1 upon x whole square. So it is the family of equation of the family of circle, okay, with center 1 comma 1 upon x and radius 1 by x. So we can say the constant r, constant, the locus of constant r is what? It is a family of circle with center r upon 1 plus r comma 0 and radius 1 upon 1 plus r. In the same way, the locus of constant rectans is a family of circle with a center 1 upon 1 comma 1 upon x and radius 1 by x. Okay, so in this way we can conclude that there are two kind of circle. The first family of circle represents constant resistance circle, okay, that is constant r circle, and the second family of circle represents constant rectans, okay, constant rectans family. So on clubbing these two you will get the Smith chart. Okay, so on we have already discussed this one, so just quickly move to this one. Okay, so now see what I have told you. Gamma r represents the horizontal axis and gamma I represents the vertical axis. So you will see a family of circle, okay, family of circle which is called as constant r circle. Why constant r circle? If we will consider the outermost circle, this one, so throughout along the periphery of this, or along the periphery of this border, okay, you will see the value of r will remain constant, which is nothing but equal to 0. In the same way, on the second circle you will see everywhere the value of r will remain constant, it is equal to 0.5. so that is why it is called as constant r circle. One more point I would like to add: as long as you are moving from outer to interior side of the circle, the value of r will increase. See here, the r is equal to 0, now it will increase to 0.5, further increases to 1, further increases to 2, like that. So once you are moving from outer border to the inner side, the value of r will increase. So it will represent the family of constant r circle. Okay, in the same way, I can also represent the family of constant x circle. So it will be represented something like that. Okay, here the upper side, the x is positive and it will represents the inductor. Okay, and the lower side, the value of x is negative and it will represent the capacitance. Okay, why? Because r plus jx, so it will represent here the x is positive, so it will represent plus jx. Plus jx is what? X is equal to omega. For inductance, for inductor the impedance is plus jx, while for the capacitance the impedance is minus jx. So upper side x is positive, so it will represent the family of inductance, different value of inductor, and here lower side the x is negative, hence it will represent the capacitive nature. Okay, so here what I would like to add the same way from here. As long as you are trying to move from the outer side to interior side, the value of x increases. In the same way here, as long as you are moving from outer to interior side, the magnitude of x increases. One more thing I would like to add with respect to this horizontal axis, the upper side and lower side are mirror image of each other. Here, if it is x is equal to plus 0.5, exactly in the symmetrical way, here there is some rectangle line which represent x is equal to minus 0.5. So the complete graph is symmetrical with respect to gamma r axis. So now just trying to club the family of constant r and constant x circuit together, so it will leads this complete chart that is called as Smith chart. Okay, just omit this dark line. This is the complete Smith chart. Now some points you have to keep in your mind. This point represents the short circuit point. Short circuit point, that means load is equal to 0. Okay, load is equal to 0, that means normalized load impedance small zl is what? Normalized load impedance small zl is also 0. Okay, small zl is also 0, that means what? R plus jx is equal to 0. R plus jx. Okay, see, if I'm saying short circuit point, that means the load is short circuited. So load is short circuited. What is the value of its impedance? The value of its impedance r plus jx. Okay, small zl is equal to 0, that means r plus jx is equal to 0. Let me see, if I'm saying short circuit point, that means zl is equal to what? Zl is equal to 0.
that means small zl is also 0. If small zl is also 0, so I can say individually the real and imaginary part is equal to 0. That means r is equal to 0 and jx is equal to 0. So r is equal to 0 and jx is equal to 0. So let us see where the r is equal to 0. R is equal to 0 is this outermost border. Okay, outermost border, everywhere r is equal to 0. Now I would like to find out the common point where both r is equal to 0 as well as x is equal to 0. So you see r is equal to 0 everywhere on this line. Okay, now let us see where small x is equal to 0. So in order to see where small x is equal to 0, you can see here. Okay, this line represents small x is equal to 0. So what is the common point? The outer border, that is small r, okay, circle, is 0 everywhere, while small x is 0 at this along this line. Okay, so the intersection of outer border, that is small r is equal to 0, that is the circle, as well as this straight line is this point. Okay, so this point represents the short circuit point, okay, on the line. In the same way, this point represents small x is equal to infinity, and same way here the smaller circle, that is small r, is equal to infinity. So that is why this point represents open circuit. Open circuit, that means normalized value small zl is infinite. Small zl is infinite, that means zl is infinite, load impedance zl is infinite. So if I'm saying load impedance zl is infinite, what it means? It means the load is open circuit. So keeping in mind, this point is always representing a short circuit load and this point representing open circuit load. Okay, and on both the lines, at both the points, here at this point as well as here at this point, the value of reflection coefficient, the magnitude of reflection coefficient gamma L is equal to what? Is unity. Okay, so now just see some important point. At PSC, what I have told you, at short circuit point, R is equal to 0 and X is equal to 0, which represents the load impedance is 0. Okay, in the same way, POC represents open circuit line. Open circuit line, that means load is open circuited. So ZL is open circuit, that is infinite impedance. Okay, now one more thing, keep in your mind, revolution along the transmission line. Okay, so just see revolution along the transmission line. So one complete revolution, okay, let us suppose starting from this point. Okay, okay, see, starting from this point, if we will complete one complete revolution and reach to the same point, so it will complete 360-degree. So if it will complete 360-degree or one complete revolution, so it means you have traveled a distance of half wavelength, that is you have traveled a distance of lambda by 2 along the line. Okay, starting from this point, either you can move in this direction or you can move in this direction, but independent to direction in which you are trying to move, what I am saying, if you are starting from this point, if you are moving in any direction, either in this or in this, and complete one cycle, okay, and complete one cycle and reach at the same point, that means you have completed 360-degree revolution. So it means you have traveled a distance of lambda by 2 along the line. Now there are two possibilities. Either you can travel a distance of lambda by 2 along the line starting from the generator side towards the load side, or you can travel a distance of lambda by 2 starting from the load side towards the generator side. In both the way, you can travel a distance of lambda by 2. So let us correlate with the direction on the Smith chart. Okay, if you are moving, see, if you are moving in the clockwise direction like that, if you are starting from any random point, if you are moving in the clockwise direction along the Smith chart, it means you are moving towards the generator, you are moving towards the generator. Okay, and now starting from any random point on the Smith chart, if you are moving in the counterclockwise direction or in the anti-clockwise direction, that means you are moving towards the load. That means आप लोड की तरफ मूव कर रहे हैं. Towards the generator, that means आप input side मूव कर रहे हैं. Okay, so if you are completing the revolution in the clockwise direction, so that means you are moving towards the generator, you are moving towards the input side from the load side. And if starting from any random point on the transmission line, if you are moving, if you are completing one complete cycle
in the anti-clockwise direction, that means you are moving towards the load side. That means starting from the input side, you are moving towards the load side. So these are the point, okay, you should keep in your mind. Now Vmax and Vmin. So keep in mind the Vmax can occur along the gamma R. See, this horizontal line represents gamma R axis. This horizontal line represents gamma R axis. Okay, and this is your center, which is 0. This is your center, which has value 0. So Vmax can be located anywhere starting from 0 towards the positive gamma R side. Okay, starting from this 0 on the right hand side here along the gamma R, the value of gamma R is negative. Okay, so it is called as positive gamma R, and while in the left hand side it is represented as negative gamma R. Negative gamma R. Okay, why? Because the gamma is you can correlate this one for the open circuit line. Okay, the reflection coefficient is positive, while for the short circuit line the reflection coefficient is negative, -1. So for the short circuit case, the reflection coefficient gamma is -1, which is a real number. Okay, so and for the open circuit line, gamma L is equal to what? +1. It is also a real number. So that means in both the cases, the point will always lie along the gamma R. Why? Because gamma is real. So gamma I will become 0. So the point will always lie along the gamma R axis. But okay, but maxima will always occur starting from 0 towards the positive gamma R side anywhere. Okay, the Vmax can occur anywhere starting from this point towards the right hand side, while Vmin can occur anywhere starting from this 0 towards the left hand side along the gamma R axis. Vmax और Vmin आपके हमेशा गामा R लाइन गामा R एक्सिस पे ही अकर करेंगे, लेकिन Vmax कहीं पर भी अकर कर सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 along the gamma R एक्सिस इन द पॉजिटिव साइड, दैट इज इन द राइट हैंड साइड. तो इस 0 से स्टार्ट करके गामा आर एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव साइड में कहीं पर भी वी मैक्स अकर कर सकता है, और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 along the gamma r in the negative side, V min कहीं पर भी अकर कर सकता है. Okay, so these points are the important point you have to keep in your mind. So in order to see how to use the in order to see the application of transmission line, as well as in order to get the flavor of Smith chart, I would like to introduce one example, okay, which is the short example of electromagnetic books by Sadiku. Okay, so just take the example: a lossless transmission line with Z0 is equal to 50 ohm is 30 meter long and operates at 2 megahertz. ओके आपके पास एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस आपको दे रखा है 50 ओम, लेंथ है 30 मीटर, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट हो रही है दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज. ओके, now the line is terminated with a load ZL is equal to 60 plus J40. If u, what is u? U is nothing but it's the phase velocity which I have represented as Vp. ओके मैंने अपने लेक्चर में उसे Vp बोला था. सो u is nothing but phase velocity which is 0.6 times c on the line. c क्या है? c है speed of light which has the value 3 into 10 to power 8 meter per second. स्मॉल c आपकी स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी वैल्यू होती है 3 into 10 to power 8 meter per second. You have to find out this one. Okay, सो यू कैन यूज दिस यूजिंग टू मेथड्स. पहला मेथड है जिसमें आपको स्मिथ चार्ट का यूज़ नहीं करना है, आप फार्मूला जानते हो और उनका यूज़ करो. सो द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मैंने पहले भी बताया था, अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहाँ पर निकालना है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द लोड एंड. सो यहाँ पर जस्ट दे रखा है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा. So that means you have to find out reflection coefficient at the load end. So load side reflection coefficient कैसे डिफाइंड होता है? ZL minus Z0 upon ZL plus Z0. So ZL की वैल्यू दे रखी है 60 plus J40, Z0 की वैल्यू दे रखी है 50. Just solve it, you will get the value of gamma. Now the second one is standing wave ratio S. तो standing wave ratio S is defined as 1 plus mod gamma upon 1 minus mod gamma. What is mod gamma? अगर आप इसका मॉडुलस वैल्यू लोगे तो मॉडुलस वैल्यू आएगी 0.3523. ओके, ये फेजर गामा इज रिप्रेजेंटेड इन द फेजर फॉर्म. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज 0.3523. तो अगर आप मॉड वैल्यू लोगे तो इट विल बिकम मॉड गामा इज इक्वल टू व्हाट 3.3523. सो जस्ट पुट द वैल्यू, you will get the standing wave ratio. Keep in mind standing wave ratio is always greater than 1. Unfortunately अगर आप सॉल्व करते हो और आपका standing wave ratio की वैल्यू लेस देन 1 आती है, that means we have incorrectly solved the problem. Okay, so always keep in mind that mod value of gamma is always less than 1 and standing wave ratio is always greater than 1. You can quickly see mod gamma is less than 1, which is 0.3523, and standing wave ratio is greater than 1, which is 2.088.
Now the input impedance. So you know what is the value of input impedance for the lossless line. Lossless line case Zin is equal to Z0 ZL plus J Z0 tan beta L upon Z0 plus J ZL tan beta L. L क्या है आपकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी दे रखी है प्रॉब्लम में आपको 30 मीटर. नेक्स्ट थिंग इज बीटा. बीटा आपको पता है इन दिस प्रॉब्लम बीटा इज नॉट गिवन टू यू. Okay, beta is not given to you, but we know the relation phase velocity Vp is equal to omega upon beta. ओमेगा आपकी क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ वेयर एफ इज गिवन टू यू 2 मेगा हर्ट्स. एफ आपको दे रखा है 2 मेगा हर्ट्स. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 मेगा हर्ट्स. ओके, what is phase velocity Vp? It is also given to you 0.6 times c, where c is 3 into 10 to power 8. So you can calculate the value of beta. So beta calculate करोगे आपको निकल कर आएगा 120 डिग्री. Sorry, you can calculate the value of beta. Now once you have calculated the beta, find out beta L. Okay, find out beta L. So आप beta L पुट करोगे. beta आप कैलकुलेट करो इस इक्वेशन का यूज करके, उसमें लेंथ L इक्वल टू 30 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो beta L की वैल्यू निकल कर आती है आपकी 120 डिग्री. Once you have calculated beta L, just put over here, you will get the input impedance like this. Okay, so this is all about how to find out all these parameter directly using the formula. Okay, now the next step I would like to calculate all these three. Okay, all these three parameters using a Smith chart. Okay, so using a Smith chart, what is your first step? First step to always try to represent एनी इम्पिडेंस. आपको कोई सी भी इम्पिडेंस जो भी दी जाए, अगर आप स्मिथ चार्ट का यूज़ करते हो, कोई भी इम्पिडेंस आपको दिया गया हो, तो आप सबसे पहले उससे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस से डिवाइड करके नॉर्मलाइज कर लोगे. कीप इन माइंड, जब भी आप स्मिथ चार्ट का यूज़ कर रहे हो, आपको कोई सी भी इम्पिडेंस दी जाए, जरूरी नहीं है कि लोड, कोई सा भी इम्पिडेंस दिया जाए, आप सबसे पहले उसे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस से डिवाइड करके नॉर्मलाइज करोगे. ये आपका सबसे पहला टारगेट होगा. ओके, सो नाउ इन द प्रॉब्लम लोड इम्पिडेंस इज गिवन टू यू. सो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, उस लोड इम्पिडेंस को नॉर्मलाइज करना. तो हम क्या करेंगे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस. तो आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस Z0 से डिवाइड करोगे. सो यू विल सी द नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पिडेंस एज 1.2 प्लस J 0.8. ओके, सो नाउ यू हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑन द स्मिथ चार्ट विच विल रिप्रेजेंट्स दिस स्मॉल ZL. आपको स्मिथ चार्ट पे वो पॉइंट लोकेट करना है जहाँ जो आपके normalized load impedance को represent करे. So let us see how to represent. First of all, see what is the value of ZL. ZL is 1.2 plus J 0.8. इसका मतलब सबसे पहले आप स्मिथ चार्ट पे R is equal to 1.2, वो R equal to 1.2 का सर्कल चेक करोगे कहाँ पर है. उसके बाद आप X is equal to 0.8. देखो यहाँ पर C, X यहाँ पर पॉजिटिव है, X is पॉजिटिव, X is प्लस 0.8, तो दैट मीन्स आपको अपर हाफ सेक्शन में देखना है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा स्मिथ चार्ट में, यू हैव टू सर्च अ सर्कल R इज इक्वल टू 1.2. नेक्स्ट स्टेप इज टू सर्च X इज इक्वल टू प्लस 0.8. अब R इज इक्वल टू 1.2 और X इज इक्वल टू प्लस 0.8, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ZL होगा. सो लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी here it is first of all let me see where I can represent. See, it's 0.9 0.8 1 1.1 and it is 1.2. so look at C, this circle. Okay, if you have, you can download the Smith chart. Okay, and you can see it by your own. Okay, so see here you can see the value of circle. Okay, so R is equal to 0, R is equal to 0.1, this circle is R is equal to 0.1, 0.2, okay, 0.3, 0.4, 0. In this way you can move, and here you can see it's this value is 0, it's R is equal to 1. It's R is equal to 1. Now neighboring to this one, there is another circle, this one, it represents R is equal to 1.1. after that this circle represents R is equal to 1.2. so this is the circle which represents R is equal to 1.2. now look at C, X is equal to 0.8. so its X is equal to 1, its X is equal to 0.9, its X is equal to 0.8. so now this is your X is equal to plus 0.8. look at C where it will intersect R is equal to 1.2 at this point P,
At this point P, R is equal to 1.2 circle and X is equal to 0.8 circle intersect each other. So point P represents the normalized load impedance small ZL. Okay, small ZL. So first step, you have represented is a normalized load impedance on the Smith chart by point P. Now what is the first thing? First thing is you have to calculate the gamma. Okay, gamma, that is reflection coefficient at the loading. So in order to find out the gamma, what you need to do, you just need to connect the point P with this center O. Okay, that is 0. So you have to just connect this point P with this line, this point O. origin से आपको इस point P को connect कर देना है. So it will form a line OP. अब इसके बाद आपको OP लाइन को extend करना है till ये point, ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर जाए R is equal to 0 सर्कल पे. ओके, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से. फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द नॉर्मलाइज्ड लोड इंपेडेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P. जब आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो आप इस पॉइंट P को इस ओरिजिन O से आपको मैच कराना है. ओके, दैट इज सेंटर ऑफ योर स्मिथ चार्ट. ओके, जो कि मैंने आपको बताया था 0, जहाँ पर गामा और गामा एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपको स्मिथ चार्ट में इजीली दिख जाएगा सेंटर. तो आपको सेंटर से इस पॉइंट P को मैच कराना है. इट विल फॉर्म अ लाइन OP. अब थर्ड स्टेप है, आप इस OP लाइन को एक्सटेंड करोगे आउटर की तरफ. कहाँ तक एक्सटेंड करोगे कि ये लाइन जाके मीट करे आपके R इज इक्वल टू 0 सर्कल पे. ओके, जहाँ पर ये लाइन R इज इक्वल टू 0 सर्कल को इंटरसेक्ट करती, उस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया Q से. ओके, सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मॉड गामा. मॉड गामा इज व्हाट? मॉड गामा इज OP डिवाइडेड बाई OQ. अब आप स्केल से OP लेंथ मेजर कर लोगे और स्केल से OQ लेंथ मेजर कर लोगे. ओके, सो स्केल से आपको OP लेंथ मेजर करनी है तो वो निकल कर आएगा 3.2 सेंटीमीटर, और आप OQ लेंथ मेजर करोगे तो वो निकल कर आएगा आपका 9.1 सेंटीमीटर. तो आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड गामा इज OP डिवाइडेड बाई OQ. OP डिवाइडेड बाई OQ. So in this way you can represent the value, you can find out the value of mod gamma, which is nothing but OP divided by OQ, or 3.2 divided by 9.1. okay, so it will you will get the magnitude as 0.3516. next thing, you have to find out the phase of gamma. phase आपको calculate करना है. so आपको reflection coefficient कहाँ पर find करना है? reflection coefficient आपको लोड साइड पे फाइंड आउट करना है, लोड एंड पे. ओके, जब आपको लोड एंड पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या करना है? फेज मेजर करना है इस OP लाइन का. इस हॉरिजॉन्टल गामा आर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये गामा R एक्सिस है, तो गामा R एक्सिस से चेक करना है कि OP लाइन कितना एंगल बना रही है. इस गामा R, पॉजिटिव गामा R एक्सिस से OP लाइन कितना एंगल बना रही है, यू हैव टू मेजर दैट एंगल. आप उस एंगल को मेजर करो एंड दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज थीटा गामा, दैट इज फेज ऑफ योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. सो ये एंगल आपका निकल कर आएगा अगर आप मेजर करते हो तो 56 डिग्री. तो you have calculated the magnitude of gamma and now you have find out the phase of gamma. So gamma can be represented as magnitude as well as phase in the phasor form, which can be represented at 0.3516 angle 56 degree. आप चेक कर सकते हो, वही आएगा जो आपने फार्मूला यूज करके फाइंड आउट किया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडिंग वेव रेशियो. तो स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. इस पॉइंट O को सेंटर एज्यूम करोगे आप, और OP लाइन के बराबर के रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे. व्हाट यू नीड टू डू, जब आपको स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड आउट करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक पॉइंट O एज अ सेंटर एंड लेंथ OP एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल. draw a circle and check where the circle intersect positive gamma R axis. ओके, आप ये चेक करोगे कि आपके इस गामा R एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है. जहाँ पर गामा R एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना, वहाँ पर आप R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, R सर्कल की वैल्यू. मैं फिर से बोलता हूँ, स्टैंडिंग वेव रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर, OP एज अ रेडियस एंड ड्रॉ द सर्कल. आपने सर्कल प्लॉट कर लिया. अब उसके बाद चेक करोगे कि ये सर्कल आपके इस गामा R एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है. तो आप देखोगे एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इसके मिरर इमेज एक यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी.
ओके अब आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे आप रीड करोगे कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है। स्मॉल आर जो आपकी सर्कल बताती है स्मॉल आर, सो आप यहाँ पर देखोगे स्मॉल आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये रीड करोगे आर की वैल्यू। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है और आपको पता है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो आप इस पॉइंट को ओमिट करोगे। यहाँ पर रीड करोगे कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी वही आपकी स्टैंडिंग वेव रेशियो बन जाएगी। ओके, सो इफ यू विल कैलकुलेट द स्मॉल आर it will become 2.1. Now you can see, let me show you. Okay, now you can see this points intersect positive gamma r axis slightly greater than r is equal to 2 point. ये जो आपकी सर्कल है दैट इज r इज इक्वल टू 2, ये आपकी सर्कल r इज इक्वल टू 2 है। तो आप इजीली देख सकते हो कि ये सर्कल पॉइंट S पे इस गामा r एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट S जो है वो r इक्वल टू 2 सर्कल के थोड़ा सा ऊपर है। So that is why I have assumed r is equal to 2.1. Okay, r is equal to 2.1. So in this way you can find out the standing wave ratio. जो r की वैल्यू होगी वही standing wave ratio की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। Okay. Now next thing you have to find out input impedance. तो आपको input impedance find out करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लेंथ है लेंथ को लैम्डा के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ओके, सो लेंथ आपको दे रखी है 30 मीटर, लैम्डा के टर्म में आपको देखना है, तो सबसे पहले देखो लैम्डा की वैल्यू। सो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज फेज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो फाइंड आउट फेज वेलोसिटी, यू नो 0.6 टाइम्स c, frequency is 2 megahertz. So just calculate the value of wavelength lambda. So wavelength lambda is equal to 90 meter. What is the length of transmission line? The length of transmission line is 30 meter. So I can say length L is equal to lambda by 3. लैम्डा आपका 90 मीटर है जबकि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 30 मीटर है, तो इसका मतलब लेंथ जो है वो लैम्डा की 1/3 है। सो इट इज लैम्डा बाई 3। अब लैम्डा बाई 2 रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री रिवोल्यूशन, सो लैम्डा रिप्रेजेंट्स जस्ट डबल 720 डिग्री रिवोल्यूशन। तो एक लेंथ ट्रेवल करने में आप कितना डिग्री का रिवोल्यूशन लोगे ये फाइंड आउट करना है। यू नो lambda by 2 represents 360 degree revolution, so that means lambda represents 2 multiplied by 360, that is 720 degree revolution. So एक वेवलेंथ ट्रेवल करने में आपको 720 डिग्री का रेवोल्यूशन लेना है स्मिथ चार्ट पे। तो हम देखते हैं कि इस लेंथ L को ट्रेवल करने में कितना रेवोल्यूशन लेना पड़ेगा। सो L is equal to lambda by 3 and lambda represents 720 degree, so it means it is 720 divided by 3। तो 30 मीटर की लेंथ ट्रेवल करने में आपको कितना रिवोल्यूशन लेना पड़ेगा स्मिथ चार्ट में, 240 डिग्री। सो 240 डिग्री का रिवोल्यूशन लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर you have to move in the clockwise direction or you have to move in the anti-clockwise direction. So ये choose करना है आपको। So now see, you have to find out input impedance. That means you have to find out impedance at the input side. That means towards the generator side. अगर आपको इनपुट इम्पिडेंस जनरेटर साइड फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आप लोड साइड से जनरेटर साइड की मूव करोगे, तो इसका मतलब आपको रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। मैंने बताया था जब यू हैव मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द स्मिथ चार्ट, दैट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स द जनरेटर साइड। ओके, और इनपुट इम्पिडेंस आपको मेजर करना है, दैट मीन्स यू हैव टू मेजर द इम्पिडेंस एट द इनपुट साइड और एट द जनरेटर साइड, दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ रिवोल्यूशन ऑफ 240 डिग्री टुवर्ड्स द जनरेटर साइड। तो आप लोड से स्टार्ट करोगे, लोड एंड से स्टार्ट करोगे 240 डिग्री का रिवोल्यूशन। क्यों? अगर आप लोड एंड से स्मिथ चार्ट पे अगर आप लोड एंड से 30 मीटर मूव कर जाओ जनरेटर की तरफ, तो आप इनपुट साइड आ जाओगे। तो अगर मैं इसको एंगुलर वे में देखूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोड पॉइंट, इफ आई विल टेक अ रिवोल्यूशन ऑफ 240 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई विल रीच टुवर्ड्स द इनपुट साइड। तो वहां पर जो भी इम्पिडेंस आएगा वो आपका इनपुट इम्पिडेंस होगा। सो जस्ट मूव फ्रॉम द लोड साइड। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोड साइड, तो मैंने बताया था पॉइंट पी आपका लोड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोड साइड। ओके, और आपको मूव कहाँ करना है, आपको मूव करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोड टुवर्ड्स द इनपुट साइड। लोड से इनपुट साइड मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोड मूव बाय एन अमाउंट ऑफ 240 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब आप मूव करोगे तो आप पॉइंट जी पे पहुंच जाओगे, आप पॉइंट जी पे पहुंच जाओगे।
Now once you reach the point G, you have to read the value of, you have to find out the value of R as well as X. ओके तो आपको R और X अगर आप देखो तो यहाँ पर G स्लाइटली, X की वैल्यू स्लाइटली पॉजिटिव होगी. ओके सो यू हैव टू रीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R एंड एज वेल एज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G X. So R I think it's almost 0.5. Okay, R आपकी almost 0.5 है, and in the same way you can read X value. Okay, so it is scanned copy, that is why not pretty much clear. So once you will read the value of R and X, okay, so it is almost 0.5 and almost 0.03. okay, so you can read easily on the Smith chart. Okay, you can download the Smith chart. Okay, and you can just try to solve this problem. You can see you can solve this problem very easily. There is no such this problem is not quite critical. Okay, so you can easily solve this problem. So once you reach the point G, here at point G you have to find out the value of R and X. फाइंड आउट कैसे करोगे, आप इस पॉइंट G पे देखोगे कि ये पॉइंट G किस R और X का इंटरसेक्शन पॉइंट है, किस R सर्कल और किस X सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट G है. आप बस उन R और X सर्कल को फाइंड आउट कर लो और उनकी वैल्यूज अगर आप नोट कर लेते हो, सो यू कैन represents the normalized input impedance as 0.47 plus J 0.03. मतलब R is equal to 0.47 और X is equal to 0.03. इन दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका ये पॉइंट G है. ओके सो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन रिप्रेजेंट नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस लाइक दैट. अब आपको इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो आप करेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द इनपुट इम्पिडेंस. So in this way you can use the Smith chart in order to solve your problem. Thank you.